Assalamu alaikum dear students, welcome to Solutions Online. In this final session of this chapter, we will focus on solving the numerical response questions of Unit 13 Sound as per the new syllabus of Federal Board 2025. These numericals helps us apply the concepts of speed, distance, frequency, time period, and wavelength in real life situations like echo, thunder, and sonar. I will explain each step in a simple and clear way so you can learn how to solve and understand them. Let's begin. Numerical number 1 is a tourist clapped his hand near a cliff and hear the echo after 5 seconds. What is the difference of the clip from the student? Distance of the clip from student if speed of sound is taken as 344 meter per second. एक स्टूडेंट ने एक क्लिफ के पहाड़ की चोटी के नज़दीक क्लैपिंग की तो 5 सेकंड बाद उसको अपनी जो क्लैपिंग थी वो गूंज कर वापस सुनाई दी। तो हमने हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड मौजूद है 344 और हमने मेजर क्या करना है डिस्टेंस ऑफ क्लिप फ्रॉम द स्टूडेंट। व्हाट इज इको? Echo is a reflected sound that comes back after hitting the surface. When you hear an echo, the sound has traveled to the wall and back. Sound पहले उस तक गई थी क्लिफ की वॉल तक फिर वापस आप तक आई. So the total time includes going and returning. Given data is echo 5 seconds, speed of sound 344 meter per second. To find distance we will use the formula distance is equal to speed multiplied time divided by 2. हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करेंगे 344 multiply 5 divided by 2 is equal to 1720 divided by 2 and the final answer will be the cliff is 860 meters away. Numerical number 2 is speed of sound in sea water is 1500 meter per second. If its wavelength is 45 centimeter, find the frequency of these sound waves. Speed of sound in sea water हमें पता है, wavelength भी हमें उन्होंने बता दी, हमने frequency, we have to find the frequency. What is frequency? Frequency means how many waves passed per second. एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हुई हैं, ठीक है। वेव लेंथ को हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो मीटर में है। वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेव लेंथ, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। उसी फार्मूला से हम दूसरा फार्मूला निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, or by putting the values of speed and wavelength we will get the answer which is 3333 into 3 hertz. So the frequency of sound wave is 3333.3 hertz. Question number 3 is a sound wave in sea water travels at a speed of 1500 meter per second and the detected back after reflection from seabed is 8.5 seconds. Find the distance from surface to the bottom of the sea. Sound goes to the seabed and it comes back. तो डबल मतलब 2 वे डिस्टेंस हम इसने ट्रैवल किया, ठीक है। हम इको फार्मूला यूज करेंगे, इसमें हमारे पास टोटल टाइम के 8.5 सेकेंड है, स्पीड के 1500 मीटर पर सेकेंड है। इको फार्मूला मीन्स साउंड गई है और रिफ्लेक्ट होकर वापस हम तक आई है। डिस्टेंस टू सी बेड क्या है? डिस्टेंस वही फार्मूला हमारे पास जो इको वाला फार्मूला है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। Distance is equal to 1500.8 multiply 8.5 divided by 2 and final answer will be 6375 meter. So the speed bed sea bed is 6375 meters deep. Question number 4 is a physician counts 69 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of heartbeats.
उसने 1 मिनट में 69 हार्ट बीट्स मेजर की, ठीक है, काउंट की। हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है और पीरियड टाइम ड्यूरेशन ऑफ द हार्ट बीट हमने फाइंड करनी है, पीरियड ऑफ द, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स हमारे पास है, ठीक है, और हमारे पास टाइम के 1 मिनट विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी विल बी number of beats per second, how many seconds we have, and the time period हमने find करना है, time period of heart beats। frequency का formula क्या है, by definition we get the number of heart beats per second, number of heart beats 69 divided by 60 second, it will be 1.15 hertz। एंड हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया, तो टाइम टी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, 1 डिवाइडेड बाय हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे 1 से, तो आंसर विल बी 0.8696 सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी इज 1.15 हर्ट्ज एंड टाइम पीरियड इज 0.87, almost 0.87 seconds। Question number 5 is find the range of wavelength as at speed 343 meter per second for audible frequency range। हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है 20 to 20 किलो हर्ट्ज, जिसको हम कन्वर्ट बाद में 20,000 में कर लेंगे। हमने रेंज ऑफ वेवलेंथ फाइंड करनी है, हमारे पास स्पीड मौजूद है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है। अब स्पीड तो हमारे पास 343 मीटर पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी की उन्होंने हमें रेंज दी है, एक उसका है फ्रीक्वेंसी लोअर और एक है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो हम दोनों फ्रीक्वेंसीज पर उसकी वेवलेंथ मेजर करेंगे, वेवलेंथ एट लोअर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हम फार्मूला यूज करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है, और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम स्पीड 343 डिवाइडेड बाय लोअर फ्रीक्वेंसी, हमने लोअर लैम्डा निकाल लिया, देन हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करके सेम फार्मूला में हम मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे। सो रेंज ऑफ वेवलेंथ इज 17.15 मीटर टू 0.01715 मीटर। Question number 6 is during thunderstorm, thunder sound is heard after 3 seconds of lightning flash. Find the distance of clouds from ground. Speed of sound उन्होंने हमें बता दी 340 मीटर पर सेकेंड। लाइट मतलब इसमें हमें ना पहले लाइट चमकती नजर आई थंडरस्टॉर्म की, फिर हमें 3 सेकेंड्स के डिले से हमें उसकी साउंड आई, ठीक है। हमने इस बेसिस पे बताना है कि जमीन से क्लाउड कितने डिस्टेंस पर है। कंसेप्ट ये है इसमें कि अब इस साउंड फ्रॉम क्लाउड टू हम तक वन वे आया है, मतलब ये नहीं कि हमने बोला और रिफ्लेक्ट करके, तो इसमें इको वाला फार्मूला नहीं लगेगा। टोटल टाइम हमारे पास 3 सेकेंड था, स्पीड हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। जस्ट बिकॉज दिस इज नॉट इको, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड साउंड, तो हम इसके लिए फार्मूला क्या, नॉर्मल फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। By putting the values we will get the answer which is 1020 meter. The clouds are 1020 meters away. Question number 7 is sonar, which is sound navigation and ranging system, sends ultrasonic signals towards seabed. सोनार टेक्नोलॉजी से अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स सी बेड के समंदर के जो डेप्थ वहां तक भेजे गए। इट रिसीव बेड आफ्टर 5.3 सेकेंड, 5.3 सेकेंड बाद वो जो साउंड वेव्स हैं रिफ्लेक्ट हो गए हमारे तक आए, ठीक है, सी सरफेस पर। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1550 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, हमारे पास टाइम क्या है, टोटल टाइम 5.3 सेकेंड, हमारे पास स्पीड मौजूद है 1550 मीटर पर सेकेंड, हमने डिस्टेंस टू सी बेड फाइंड करना है, और ये इको है, ये रिफ्लेक्टेड वॉइस आई है, ठीक है। सो वी विल यूज द इको फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 2। स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो फाइनल आंसर इज 4107.5। so depth of the sea is 4107.5.
Okay, thanks for watching. That's all for today, and that's all from the chapter number 13, which is sound. You have now completed all the exercise questions of this chapter. Understanding how to apply from today's lesson, you have understood that how to apply formulas in these problems is key to scoring well in exam. So revise regularly and try to solve similar examples on your own. Stay focused and keep practicing. Inshallah, you will learn in no time. See you in next lesson. Till then, Allah Hafiz and happy learning.